Welcome to SST College of Arts and Commerce. I am Assistant Professor Kashish Hodchandani. Welcome you all in our channel SST Edupedia. Today we are going to learn about diagonal communication and objectives of communication from the subject business communication. So diagonal communication has one more name, that is cross-sectional communication. What is diagonal communication? Diagonal communication is transfer of information between people who are neither in the same department nor on the same level of organization. This provides cross communication between departments. The diagonal this way. Communication कोई भी डिपार्टमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट तक पहुंच सकता है, जरूरी नहीं है इट शुड मेंटेन द हायरार्की. एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, vertical and horizontal communication, it is a mixture of vertical as well as horizontal communication. The information occurs between individuals or teams not on the same department or level in the organization. It is also known as cross-wise communication. जरूरी नहीं हो कि सेम डिपार्टमेंट के लोग इंफॉर्मेशन पास करें या सेम लेवल के लोग इंफॉर्मेशन पास करें. The information can be passed from higher authority from one department to the lower authority from the different department. As you can see on my screen, Vice President Marketing is doing communication with Manager of Finance and Vice President of Finance is communicating with Marketing Manager. Vice President Operation is communicating with Sales Manager and Vice President of Sales is communicating with Operation Manager. So in this is the situation it arises in the case of emergency. कुछ important message pass करना हो, we will not wait for the person in hierarchy or in the ladder. We will pass the communication, we will pass the information from one department to another department easily. So as you can see again on my screen, this gives a clear picture to us. Manager is communicating with the lower level authority with the last level of authority and it is not necessary कि उनका manager है, दूसरे department के manager भी communicate कर सकते हैं. So again diagonal communication is a communication held between different structures of a business firm. It is a communication between the higher and lower sectors of a business firm. It is also known as cross-functional communication. There are both advantages and disadvantages of diagonal communication. What are the advantages? It ends communication barriers between the higher and the lower sectors of a business. अगर emergency आई, as I told you, lower level authority can also communicate with the top level management and top level management of one department can communicate with the another department. So there are no barriers कि restriction नहीं है कि आप communicate नहीं कर सकते. What is the meaning of barrier? Barrier means restriction. No restrictions at all. इससे क्या होता है ना? It increases the efficiency and speed of the labor if positive relations are created. Efficiency बढ़ती है, speed बढ़ती है labor की. It can be used as a team build up motivational tool. Yes, इससे team building होता है, team create होता है. Team work is a dream work. अगर हमको कुछ emergency है, message pass करना है, तो हम वेट नहीं करेंगे कि हमारे हेड कब आएंगे, तुरंत हम दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को भी मैसेज पास कर सकते हैं. इससे टीम वर्क बढ़ता है. इट हेल्प्स इन चैलेंज एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है एंड यस whatever challenges are there we can overcome that. Now what are the disadvantages of diagonal communication? It can increase competitiveness as more information of ongoing production is given. It may consume time of the employees. For example, work chat groups don't have details of work assignments as they consume time as well. Time consumption may also lead to inefficiency. Due to lack of proper communication skill of employees, misunderstanding may arise. So disadvantage क्या है? The people in the hierarchy, the people, the superior to us, the people who are head of us, they may be very sad, they may be angry because it may happen कि जो information हमको दूसरे department में नहीं देनी थी हमने गलती से दे दी. इससे क्या होता है? Misunderstanding बढ़ती है
our superiors may get angry. It also leads to wastage of time. Correct? We are passing the information from one department to another, and actually we don't have to pass in all the departments. हमको सिर्फ यही एक ही डिपार्टमेंट का हमारे लिए मैसेज था, बट हमने एंजाइटी की वजह से सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को बता दिया. इससे टाइम वेस्ट होता है. नेक्स्ट थिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, एंड ऑल्सो देयर आर poor communication skills. The proper communication skills are not arise because we have passed the wrong message to the department. वो उस department के लिए था ही नहीं. Correct? Next, we are going to discuss about the objectives of communication. हम communication करते हैं. What is communication? Exchange of ideas, exchange of information, exchange of feelings. So, communication is understanding of feelings, understanding ideas, information. Now, what are the objectives? क्यों communicate करते हैं हम? इसका क्या reason है? So, we have 10 objectives here. The first one is building awareness. Spreading information about a product or service or generally an information. Awareness लाने के लिए, अगर मैंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ले लो. वी हैव टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. फॉर दैट वी नीड टू कम्युनिकेट. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन. Educating or imparting knowledge happens through continuous process of communication only. Today we are imparting knowledge to you all students. हम आपको सिखा रहे हैं तो वो भी एक communication है. आप सीख रहे हैं, आपको education मिल रहा है, आपको knowledge मिल रहा है, आपको information मिल रहा है. That is also the main objective of communication. Next is persuasion. To influence the attitude, feeling or thoughts of others or simply their action. परसुएट करना, मनाना. तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम कम्युनिकेट करेंगे. अगर मुझे आप लोग को संडे के दिन बुलाना है एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए, तो आई एम गोइंग टू परसुएड यू. आई एम गोइंग टू टेल यू प्लीज स्टूडेंट्स कम ऑन संडे. ओरल कम्युनिकेशन से ये पॉसिबल है कि वी कैन परसुएड आवर स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन कैन परसुएड द एम्प्लॉयज इन एन एफिशिएंट वे. नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट. Media industry like radio, TV, etc. communicate current issue, business and fashion, etc. Media industry, हम टीवी देखते हैं, करेक्ट? वहां से हमको क्या पता चलता है? We hear the news. कम्युनिकेशन कैसे होता है? वो कम्युनिकेट करते हैं हमसे, हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, and we listen and we come to know the facts. करेक्ट? Next is motivation. People provide with motive or incentive for their efforts. Motivation से क्या होता है? We motivate even students. Work hard, you will get good marks. Similarly, organization भी employees को motivate करते हैं. Do more and more production. ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, you will get incentive. आपको बोनस मिलेगा. अगर आपने ज्यादा काम किया या एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आप एक्स्ट्रा बैठे apart from your working hours, तो you are going to get incentive. You will get bonus. You will get increment in the salary. This way, with the help of communication, we can motivate our employees in an organization. Warning. Urging or advising someone to be useful. The best example of this is, अगर कोई employee daily late आता है कंपनी में, if an employee is coming daily, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. One day, we can understand. 2 day, चलो ठीक है कोई बात नहीं, but 3rd day, but obvious, जो हमारे head हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे एचओडीज हैं, वो हमसे पूछने वाले हैं कि डेली लेट क्यों आते हैं आप. एक दिन का बात हम समझ सकते हैं, चलो नो प्रॉब्लम. सो वार्निंग मिलता है. वो वार्निंग भी कैसे मिलता है? ओरल कम्युनिकेशन से, कि अगर आप अभी 4 दिन अगर डेली ऐसे लेट आए ना, तो 4 डेज के बाद योर सैलरी विल बी डिडक्टेड. सो दिस वार्निंग विल हेल्प द एम्प्लॉय टू कम ऑन टाइम. Suggestion: giving smaller piece of information to enhance the outcome of the activity. Suggestion देना, राय देना. So communication में हम suggestions भी देते हैं, हमारे बॉस हमको suggestion देते हैं, अगर आपने ऐसा काम किया तो इसका ज्यादा फायदा होगा. तो this gives us the boost up to work hard more and work in the right and the proper direction. Best coordination.
coordinates employee of the organization to achieve the goals. Our head, our coordinators, our HOD, हमारे जो भी बॉस हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं, एम्प्लॉय के साथ टच में रहते हैं, कितना काम हुआ, कितना पेंडिंग है, उससे क्या होता है, वो कम्युनिकेशन होता है. एक्चुअली दैट इज नथिंग एल्स बट व्हाट, दैट इज कम्युनिकेशन. उससे क्या होता है, द वर्क गोज ऑन द राइट ट्रैक एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड वेरी properly, increases efficiency. Managers communicate right ideas, practices, strategies, etc. Now managers proper ideas देते हैं एम्प्लॉइज को, प्रॉपर तरीके से काम कैसे करना है, they develop that habit in the employees. They also give different strategies so that the work can be done in very efficiently and in proper time. Advice and complaint, it is given to people who have a problem or issue. When there is defects and faults, it can be rectified through communication. अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया है तो व्हाट विल बी द बॉस डूइंग, बॉस एडवाइस देंगे, उनको बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा काम नहीं करना, अगर आपने किया है तो आपका सैलरी कट हो सकता है या आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस दिए जाएंगे. सो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रॉब्लम्स कैन बी sort out. So what are the 10 objectives of communication? Building awareness, providing information and education, persuasion, entertainment, motivation, warning, suggestion, best coordination, increasing efficiency, advice and complaint. So if any organization want to achieve the goals, proper communication should be there in the organization between both the levels, higher to lower and lower level to higher level. I hope it is clear to all. Thank you.